Hello students, now we will do the anatomy of inguinal canal with its applied anatomy. So this lecture is mainly on inguinal canal. तो inguinal ligament के लिए बेटा अलग वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो, उसके बाद ये देखोगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए. So this is canal. Canal is opening. So the inguinal canal is a natural passage between muscles of anterior abdominal wall. That means this is the anterior abdominal wall बच्चों. The lower part of the anterior abdominal wall, this thing has a natural opening defect in the muscle. These are the muscles of anterior abdominal wall. इनमें एक नेचुरल डिफेक्ट होता है, नेचुरल ओपनिंग होती है, नेचुरल कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द इंगोइनल कैनाल. दिस इज ऑफ वेरिंग साइज एज पर एज. It is present both in male as well as in female, but in male it is well developed. So inguinal canal दोनों सेक्स में होती है, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है. इट इज एन ओब्लिक टनल, हमने बात कर ली. इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन, दिस इज लेटरल साइड, दिस इज मीडियल साइड. यहाँ से कट सेक्शन लिया, लेफ्ट साइड की एब्डोमिनल वॉल है ये. सो डायरेक्शन ऑफ दिस कैनाल इज द डाउनवर्ड, that is downward, forward and medially. So downward, forward and medially is the direction. It extends between the deep inguinal ring and the superficial inguinal ring. So inguinal canal is the opening between deep and superficial inguinal rings. What are the contents of this canal? You can appreciate this structure. Here first of all, this one is the deep inguinal ring and here is the superficial inguinal ring. In between these rings, the canal is known as the inguinal canal. And this is anterior abdominal wall, anterior view. This is anterior abdominal wall. These are the muscles of anterior abdominal wall. और ये white color में जो show किया है, this is the aponeurosis. Contents in male. In male, this is the content. It contains, or spermatic cord passes through it. तो content है बच्चों इसका spermatic cord. In female it is round ligament of the uterus. That's why हमने पिछली स्लाइड में बोला था ये दोनों सेक्स में प्रेजेंट होती है. In both sex, the nerve, ilioinguinal nerve, the II nerve, ilioinguinal nerve is also present in this canal in both sex. Now, spermatic cord, components of spermatic cord. अगर बच्चों दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पर्मेटिक कोड, कोड लाइक स्ट्रक्चर है, हमने इसको ट्रांसवर्सली कट किया है. नाउ वी आर वाचिंग दिस थिंग. सो इट कंटेन्स डक्टस डेफरेंस, बास डेफरेंस भी बोलते हैं बच्चे इसको, टेस्टिकुलर एंड क्रीमेस्टिक आर्टरीज, देन आर्टरी ऑफ डक्टस डेफरेंस. इट कंटेन्स पेम्पिनिफोरम प्लेक्सिस ऑफ द वेनस, lymphatic vessels of testes, genital branch of genitofemoral. But you can appreciate the ilioinguinal nerve is outside of this spermatic cord. So ये spermatic cord है बच्चों. Outermost layer is the external spermatic fascia. Then we have the cremastic muscle and cremastic fascia. Third is the internal spermatic fascia. Inner to internal spermatic fascia, these are the pampiniferal plexus. Here we have the testicular artery, the artery for cremastic muscle. Now we have also artery for ductus deferens. Then we have the lymphatic vessels and the structure. This structure is the ductus deferens. So all of these are the MCQ question, and it also contains the processus vaginalis. Processus vaginalis is embryological structure. Now, first of all, what is the superficial
रिंग, बच्चों दिस थिंग, हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में आपको ओरिएंट कर देता हूँ। दिस इज द आउटर साइड, सो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया को रिफ्लेक्ट करने के बाद हम इन लेयर्स में आए। तो आउटर मोस्ट लेयर इज द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, और वाइट कलर में इसका एपोन्यूरोसिस, सो एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, मैं भी येलो कलर में शेड कर रहा हूँ बच्चों। देन inner to external oblique, second layer is the internal oblique muscle, here is the aponeurosis of internal oblique muscle, third one is the, बाहर से अंदर को जा रहा हूँ, third one is the transversus abdominis, its aponeurosis you can appreciate here, the internal oblique and transversus abdominis दोनों ज्वाइन हुए इनके एपोन्यूरोसिस एंड दे फॉर्म द conjoined tendon. Then inner to transversus abdominis muscle we have the transversus abdominis fascia, this thing. Inner to this fascia we have the peritoneum. Between the peritoneum and fascia transversalis we have the extraperitoneal fat. So these are structure present over here. Here you can appreciate this is anterior spherical iliac spine. From anterior spherical iliac spine till the pubic tubercle we have a ligament, it is known as the inguinal ligament और पोपार्ट लिगामेंट, जिसके ऊपर अलग से वीडियो है, you should watch that. Below this area, this is the area of femoral canal. So this is the area of femoral canal, इसकी आज बात नहीं कर रहे हैं. And this is the area of inguinal canal, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं. So the inguinal canal is canal between superficial and deep ring. Now we are going to discuss only superficial ring. So superficial ring is a defect in the aponeurosis of external oblique muscle, and it is related to the crest of the pubic. So this is the pubic bone, this is pubis symphysis, this center point is the pubis symphysis, and this attachment is pubic tubercle. In between these two we have pubic crest. So black color जो मैंने अभी शेड किया है, this is the pubic crest, and this opening, the superficial inguinal ring is triangular in shape, and the base, this is the base of the triangle, the base of this triangle is directed toward anterior superior iliac spine. The opening is of variable size, but maximum बच्चों ये middle of this, middle 1/3 of this inguinal ligament से आगे नहीं होती. So it is maximum till the middle 1/3 of the inguinal ligament. इसी ओपनिंग की बात कर रहा है बेटा, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इससे आगे नहीं होता है. द रिंग, दिस रिंग इज स्मॉल इन फीमेल एंड इट इज वाइड इन मेल. इट इज ट्रायंगुलर, हमने पहले ही बात की. सो द एपेक्स, दिस इज द एपेक्स and the sorry, this one is the base, this is the apex, and apex is directed toward the anterior superior iliac spine, and the base is directed or it is resting on the pubic crest. हमने पहले बोला तो ब्लैक कलर में हमने ड्रा की थी pubic crest, जो भी हमने ब्लू में की है. So base is on pubic crest and the apex is toward the anterior superior iliac spine. Both sides these, they are found by the lateral and medial crura, lateral and medial crura, and these cruras are joining with each other near the apex and they are forming the intercrural fibers. The lateral crura is stronger as compared to the medial crura. Clear? So this is the superficial inguinal ring, triangular ring.
Apex is directed toward anterior superior spine. Base is resting on the pubic crust. It is formed by the cruras, lateral crura, medial crura, and there is intercrural fibers. And it is large in male as compared to the female. Deep inguinal ring. So deep inguinal ring is defect in fascia transversalis. Deeper side होगा बच्चों. So it is defect in fascia transversalis. It is important. It is lying midway between anterior spheric ilispine and pubic symphysis. बच्चों यहाँ पे दो चीजें क्लियर होनी चाहिए. The inguinal ligament is attached on the pubic tubercle. But अभी जो बात कर रहे हैं that is we are talking about pubic symphysis. So this is the anterior spherical spine and this is the pubic symphysis. Line joining these 2 points is known as the inguinal point, inguinal line. Mid of this line is known as mid-inguinal point. This is the mid-inguinal point. So the deep inguinal ring is lying 1.2 centimeter above the mid-inguinal point. The deep ring is oval and it is vertical along the long axis. It is of variable size, but it is usually 1.2 centimeter wide in adult. Again, it is large in male as compared to female, and it is lying lateral to the inferior epigastric vessels. That means the inferior epigastric vessels are lying medial to this opening. So इस डायग्राम में थोड़ा सा वही आपको रिवाइज करने के लिए मैंने डायग्राम रखा था. We can see this is left side of the anterior abdominal wall. हमने बच्चों skin, fat, superficial fascia and deep fascia reflect कर दिया है. Then we are watching from anterior side. This is superficial ring. It is triangular ring. It is present. The defect is present in the aponeurosis of this muscle. This is external oblique muscle. Then this is deep ring. This is the defect present in the aponeurosis, not aponeurosis, in the fascia transversalis. These two are important. In between we have the muscular layers. So superficial ring and deep ring. Superficial inguinal ring, hiatus is always opening बच्चों. So superficial inguinal ring is opening in the aponeurosis of external oblique and it is just above the pubic crest. We know the deep is an opening in the fascia transversalis and it is about 1.2 centimeter above the mid-inguinal point. Now boundaries, वही डायग्राम द्वारा देख सकते हैं बच्चों. इससे बाउंड्रीज बड़ी इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी. The inguinal canal, we know inguinal canal is slant oblique canal. It is directed downward medially from deep to superficial inguinal ring and it is about 4 centimeter in length. So अगर हम anteriorly देखें, इसके anterior क्या होगा? We have skin, superficial fascia and aponeurosis of this muscle. This was the anterior muscle. External oblique. इस canal की बात कर रहे हैं. इसके anteriorly बेटे we have the external oblique muscle and these fibers. Laterally, this is lateral side. This is medial side. Laterally, you can appreciate again. Anteriorly, laterally it has muscle. This is the second muscle. You can appreciate this is internal oblique muscle. Posteriorly it has reflected part of the inguinal ligament. Conjoint हमने अभी किया, conjoint ligament, fascia, जो भी posterior structure है वो सारे इसके posteriorly होंगे ना बच्चों. So fascia transversalis and extraperitoneal fat. Superiorly इसके ऊपर again now you can see superiorly
the arch fiber, here you can see the arch fiber of internal oblique and the transversus abdominis and conjoint ligament. Again वही बात आ गई, inferiorly नीचे क्या है इसके, fascia transversalis inferior, then the inguinal ligament, medially it has lacunar ligament. बच्चों this is the inguinal ligament. इस ligament की वीडियो में देखना, मैंने उसमें शो किया है आपको, रिफ्लेक्शन होती है inguinal ligament की, that is known as the lacunar ligament, that is present inferior to this inguinal canal. Now in newborn the deep and superficial ring are superimposing, that means deep ring and superficial ring are superimposing, एक दूसरे के ऊपर होते हैं ये, but infant में they are 1 centimeter apart from each other. In childhood, now abdomen की ग्रोथ की वजह से बच्चों they are separated, इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है. In adult it is one ring is here and second is here, so they are separated, they are not superimposing in adult. Because of this thing it will act as shutter effect, वो हम next इसके applied में करेंगे. Now what is Hasselbalch triangle? So again this is right side of the abdomen, this is pubic symphysis, pubic crust, pubic tubercle, this is anterior spherical spine. The ligament from anterior spherical spine to pubic tubercle is inguinal ligament. This is the aponeurosis of external oblique muscle. हमने बोला यहाँ पे एक vessels है, artery है, we have the inferior epigastric artery and this is rectus abdominis muscle. Now the area, that triangle, you can appreciate this area. This is a triangular area present in the lower abdominal wall is known as Hasselbalch triangle. It is bounded, so this side is medial side and this is lateral side. Medially it is bounded by the lateral border of rectus abdominis muscle about lower 5 centimeter. Laterally it is bounded by inferior epigastric artery. Inferiorly it is bounded by the inguinal ligament, and the medial umbilical ligament divides this triangle into two parts. इस triangle के दो part हो जाएंगे बच्चों. This is the lateral and the medial part of Hasselbalch triangle. इसका यूज करेंगे हम क्लिनिकल यूज में, एंड इसके बारे में हमने पहले बात कर ली है, that deep inguinal ring is lateral to the vessel. And the floor, हमने floor की शुरू में बात की थी, floor is covered by the peritoneum, extraperitoneal fascia and the muscle. Now mechanism of inguinal canal, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग है, हमने किया बच्चों में they are superimposing, superficial and deep ring. अगर ये एडल्ट में भी ऐसा ही रह जाता तो when there is increase in intra-abdominal pressure, that is in case of sneezing, coughing, defecation, किसी भी रीजन में वेट लिफ्टिंग, अगर बॉडी के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ऐसे कोई डिफेक्ट रह जाता तो विसराज विल प्रोट्रूड आउटसाइड. उसको प्रोटेक्शन के लिए नेचुरली सबसे पहले तो इंग्वाइनल कैनाल को ओब्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया हमारे एब्डोमेन ने विद द डेवलपमेंट, ये हमने अभी पढ़ लिया. नाउ दिस ओब्लिक कैनाल इज नेचुरली प्रोटेक्टेड, दैट मीन्स हमें पता है इसका खुद का कंटेंट, इन मेल वी हैव द स्पर्मेटिकोड विद द इलियोइंग्वाइनल nerve, in female the round ligament with ilioinguinal nerve. इन नेचुरल कंटेंट्स को छोड़ के कोई और कंटेंट इनमें प्रोट्रूड ना हो, इस कैनाल में ना आए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वी हैव द नेचुरल मैकेनिज्म, दैट इज नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल. मतलब मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कैनाल इज द मैकेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स द इंग्वाइनल हर्निया. ओके, सो ये मैकेनिज्म कैसे है, नेचुरली कैसे है हमारी बॉडी में.
फर्स्ट ऑफ ऑल द ओब्लिकसिटी ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, हमने पहले बोला इंग्वाइनल कैनाल ओब्लिक है और ये मसल्स की बाउंड्री से बनी है. सो दीज मसल विल एक्ट लाइक द वॉल्व मैकेनिज्म. जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, द मसल विल एक्ट लाइक वॉल्व एंड दे विल क्लोज द कैनाल. Secondly, superficial inguinal ring. This superficial inguinal ring is triangular, we know, triangular, and it is present against the conjoint tendon. वो हमने कर लिया. conjoint tendon की वजह से जब बच्चों इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये टेंडन इस सुपरफिशियल रिंग को क्लोज कर देगा, तो कोई ऑर्गन बाहर प्रोट्रूड नहीं हो सकता. देन डीप इंग्वाइनल रिंग. डीप इंग्वाइनल रिंग इज गार्डेड बाय फ्लैशी फाइबर ऑफ इंटरनल ओब्लिक, हमने किया था. डीप इंग्वाइनल रिंग is opening in fascia transversalis, but anteriorly it was guarded by internal oblique muscle. So if there is increase in intra-abdominal pressure, this internal oblique muscle will close this opening. Then we have the internal oblique muscle. This internal oblique muscle is actually present lateral to the canal. Canal की पूरी lateral boundary बनाता है बेटा internal oblique muscle. So if there is increase in intra-abdominal pressure, it will act as shutter and it will close the canal. Then contraction of cremasteric muscle. Cremasteric muscle is nothing, it is just the detached part of internal oblique. ऐसे detached part होता है cremasteric muscle and cremasteric fascia. So if there is increase in intra-abdominal pressure, this cremasteric muscle और cremasteric fascia will act as valve. ये ऊपर को आएगा बच्चे और ये valve mechanism करके superficial ring को close कर देगा. Then external oblique muscle will approximate the two cruras like slit valve. हमने बोला superficial ring is triangular and it was guarded by or found by two cruras, lateral crura and medial crura. If there is increase in intra-abdominal pressure, these crura will guard the superficial ring. Crura किसके थे? External oblique aponeurosis के. This will guard the superficial ring. So by these all mechanism, then we have lastly hormones. Hormones and all these mechanism will act to close the inguinal canal at the time of increase intra-abdominal pressure. Now, what is inguinal hernia? Inguinal hernia is just protrusion of any viscera. So inguinal hernia से पहले अगर हम बात करें inguinal canal की, so this area of the abdomen is weak area, but हमने last slide में किया, it is naturally protected. So normally there is no hernia from this area, but in some condition herniation of the organs or the viscera can occur, and it is more common in male as compared to in female. And the organ can protrude through this canal, through the abdomen, in two ways. According to that, the hernias are indirect inguinal hernia and direct inguinal hernia. So what is indirect inguinal hernia? If the organ or the viscera is protruding through the deep inguinal ring. So this was the deep inguinal ring, which was the defect in fascia transversalis that was lying lateral to inferior epigastric. तो यही बोल रहा है inferior epigastric vessels यहाँ कहीं थी, उससे lateral है. So if the organ is protruded from this area, then it is known as indirect. Indirect I, organs protrude through D, deep. उल्टा है बच्चों, याद रखना. Deep inguinal ring से अगर organ protrude होता है, then it is known as indirect inguinal hernia. And it is most commonly because of the patent processus vaginalis. What is this processus vaginalis? Processus vaginalis is tube-like extension of peritoneum in embryo. Peritoneum बच्चों यहाँ से extend होती है through canal, then it will reach to the scrotum with spermatic cord. But in adult, it should obliterate
अगर ये ओब्लिटेट नहीं होती है, it will remain patent and it will cause the most common cause of indirect inguinal hernia. So most common cause of indirect inguinal hernia is patent processus vaginalis. So अगर आपको indirect inguinal hernia पे क्वेश्चन आता है, you have to write this word. This word is very important, patent processus vaginalis. So, and this is one reason. Second reason is progressive weakness of the posterior abdominal wall. उसकी वजह से भी organ यहाँ से protrude हो सकते हैं. And then the small if you got a question, what are the coverings of the structure or the viscera passing through it? So the covering are same as that of the structure which is normally lying in this area, that is spermatic cord. So जो भी बेटा यहाँ से हर्निया होगा जिस भी चीज का, उसकी कवरिंग भी वही होगी जो स्पर्मेटिक कोड की कवरिंग होती है. And if hernia extends through the superficial inguinal ring, हमने बोला indirect deep inguinal ring से होता है, then the protruded organ or the processus vaginalis will enter from deep inguinal ring to the inguinal canal, then to the superficial inguinal ring, then to the scrotum. Then if it is passing through the superficial canal, it is again covered by external spermatic fascia and processus vaginalis. Then direct inguinal hernia. Second one is the direct inguinal hernia. If the organ is protruded through this was the superficial inguinal ring. So if viscera, internal viscera or loop of the intestine are protruding through the superficial ring, then it is deep inguinal hernia. If they are protruding through deep ring, then those are indirect. Indirect deep से है बच्चों, डायरेक्ट सुपरफिशियल से. उल्टा है, तभी मैं बोल रहा था इनडायरेक्ट डी से है, सुपरफिशियल से डायरेक्ट है. सो हमने पहले बात की है. हियर वी हैव ए ट्रायंगल, this triangular area, this is the Hasselbalch triangle. So direct inguinal hernia is occurring if the organ is protruding through this triangle. इस triangle की फ्लोर बनी थी बच्चों मसल्स से. So if there is weakness of these muscles or this muscular layer in the abdomen, then the internal organ इसके अंदर होती है बच्चों हमारे पास, the intestinal coils, they will protrude from this area and this is known as the direct hernia. So हमने पहले बोला Hasselbalch triangle के two parts होते हैं. So that's why the direct hernia has two parts. This one is the lateral direct hernia and here will be the medial direct hernia. So lateral direct hernia, lateral direct hernia अगर होगा तो इसकी कवरिंग क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, this is the inferior epigastric vessel. So lateral direct inguinal hernia is medial to the inferior epigastric vessels. कवरिंग लगभग सेम है. सबसे पहले सेम होगा, अंदर से कोई चीज बाहर आ रही है बच्चों, अंदर से एब्डोमेन से कोई चीज बाहर आ रही है तो क्या क्या कवर करेगी? तो इसके पास सबसे पहले अंदर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा, देन इनरमोस्ट लेयर दैट इज द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, देन क्रीमेस्टिक फेशिया, इंटरनल ओब्लिक की जगह क्रीमेस्टिक फेशिया बिकॉज उसका एपोनेरोसिस आता है यहाँ पे, देन एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का होता है, स्किन. ओके, अब if it is protruding through this area, this is the medial direct inguinal hernia. लगभग सेम है, सेम इंटरनली कोई ऑर्गन अंदर से बच्चों बाहर को प्रोट्रूड हो रहा है, देन इनरमोस्ट लेयर सबसे पहले इसको कवर करेगी, दैट इज द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, देन फेशिया ट्रांसवर्सालिस, कॉन्जॉइंट टेंडन एंड एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया. इतना डिफरेंस है, यहाँ कॉन्जॉइंट टेंडन है एंड हियर वी हैव द क्रीमेस्टिक फेशिया. वाई बच्चों? बिकॉज कॉन्जॉइंट टेंडन का एरिया ही ये है. कॉन्जॉइंट किससे बना था? ट्रांसवर्सस
एब्डोमिनस एंड इंटरनल ओब्लिक का। उससे पहले इंटरनल ओब्लिक मसल जो है वो यहाँ से अपना एक पार्ट देता है जिसको हम बोलते हैं क्रीमेस्ट्रिक। सो क्रीमेस्ट्रिक fascia is lateral and the conjoint tendon is medial. You should know only this thing, rest all are same. So these are MCQ question. MCQ question में ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं कि स्किन सबको कवर करेगी ऊपर एंड द दिस हमने पहले बोला इसका रीजन है, इसका कोज है द वीकनेस ऑफ दिस मसल्स. सो दिस weakness will increase with increase in age. So this type of the hernia is most common present in the old person. So एक बार differences देख लेते हैं. Inguinal hernia are of two type, direct and indirect. Direct, if organ is protruded through the deep inguinal ring. हमने पहले बात की है, अगर डीप इंग्वाइनल रिंग से ऑर्गन प्रोट्रूड होगा then it will enter in the inguinal canal, then it will enter in the superficial inguinal ring, then it will enter to the scrotum. So अगर कोई ऑर्गन या प्रोसेसस वेजिनलिस ऐसे प्रोट्रूड होता है then this is the deep indirect from deep inguinal ring. And हमने पहले बोला it is mainly because of the patent processus vaginalis. It may be partial or complete patent processus vaginalis and it is most common in infant and children. Direct हमने बात किया it is because of the defect in the abdominal wall, वो हमने बात की थी Hasselbalch triangle, and it is mainly if organ is protruding through the superficial inguinal ring. Here organ is not entering to the scrotum. जो हमने indirect की बात की थी अभी, deep, superficial ring and scrotum. So organ was protruding like this, but in this case direct hernia, here is the superficial ring, here is the interior abdominal wall. So organ is protruding from here. This organ will not enter to the scrotum. And हमने पहले बात कर ली ये ओल्ड एज वालों में होता है because of the muscle weakness. This is important. The direct inguinal hernia बच्चों यहाँ से है. So if patient will stand, अगर patient stand होता है तो loop of intestine, if we imagine loop of intestine यहाँ से herniate हो रही है, जब patient बच्चों standing position में होता है this loop will come out and then patient will lie down, this loop will reduce. So direct inguinal hernia will come out if patient is standing and it will reduce by itself if patient is lying down. But indirect inguinal hernia will not reduce. ये reduce नहीं होता बच्चों, इसको डॉक्टर फिंगर से रिड्यूस करता है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक रिड्यूस होता है. दिस इज अ मेजर डिफरेंस. देन the direct inguinal hernia, here organ will come out from the Hasselbalch triangle and obstruction is uncommon because of broad neck. This is the sac of the hernia. Every hernia has sac, body and neck. The neck of this direct is broad, so इसमें obstruction नहीं होती, तभी तो ये वापस चला जाता है like this. ये हमने कर लिया as per Hasselbalch triangle. These are of two type, medial and lateral. So thank you. I think topic आपको clear होगा. If you have any question, any query, you can ask me.